Yushman Singh Jamwal. Breaking news coming in over the Seema Haider mystery, ladies and gentlemen. Seema Haider speaks exclusively to CNN News 18 after being grilled by the Uttar Pradesh ATS. Seema says she wants to stay in India. Listen in to the entire conversation. सीमा, जब आप एटीएस के साथ थी, बहुत सारे आरोप लगे कि आपको लेकर कि आप जासूस हैं, पाकिस्तान से किसी मकसद से आई हैं। क्या कहना है उस पर? ऐसा कुछ नहीं है, फिर भी जांच चल रही है। अभी जो मेरी चीज़ों की मोबाइलों की चल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे यकीन है कि सच सामने आएगा और सच में ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अवैध तरीके से तो आई है ना? ये मानती हूँ, मेरा गुनाह है। मेरा गुनाह है कि बगैर वीज़े, क्योंकि मुझे वीज़ा यहाँ का मिल नहीं रहा था। मजबूरी में मुझे इनकी मोहब्बत में कुछ भी नहीं दिखा, सही गलत नहीं दिखा, मैं आ गई। पर मानती हूँ मैंने गलती करी है। लेकिन इतने पासपोर्ट, इतने फोन, एक फोन टूटना और इतने फर्जी दस्तावेजों के साथ क्यों आई? अगर आना ही था तो कोई मुकम्मल चीजें लेकर आती हैं। मुकम्मल चीजें हैं मैम। तो ये 4 से 5 पासपोर्ट की बात? मेरे बच्चे तो 4 है ना, इनके पासपोर्ट जहाज में चढ़ने के लिए इनके पासपोर्ट चाहिए थे। नेपाल आने के लिए इनके 4 मेरे बच्चों के हैं, एक मेरा है। एक में मेरे नाम जो है उसमें नेपाली एम्बेसी ने वीजा नहीं दिया, उसको खारिज कर दिया, तो मैंने दूसरा पासपोर्ट बनाया। लेकिन अगर डिपोर्ट किया गया आपको पाकिस्तान, तो क्योंकि आप फर्जी तरीके से आई हैं, आप अवैध तरीके से आई हैं, आपको कहा जा रहा है कि दूसरा मुकदमा तो चलेगा ही ना आप पर? बिल्कुल चले, मैं यहाँ जेल जाने को तैयार हूँ, पर वापस जाने को तैयार नहीं। जिस तरह मुझे यहाँ का कानून रखेगा ना, जैसे अब मुझ पे कानून लागू है कि सीमा कहीं नहीं जाएगी, मैं पूरी जिंदगी इस घर में बिताऊंगी, पर मैं वापस नहीं जाऊंगी। एटीएस के सवाल क्या क्या रहे? क्या क्या सवाल पूछे गए? कुछ अगर आप जानकारी दे पाए। जो हमारी शुरू से पूछताछ थी, जो होती आई है वही पूछताछ हुई थी। और अभी क्या आप लोग यही इसी घर में रहेंगे? जी बिल्कुल, अगर आप लोगों ने रहने दिया तो। नहीं, आप रखने के लिए तैयार हैं इनको? यही शादी करेंगे हिंदू रीति रिवाज से? लेकिन शादी करेंगे कैसे, क्योंकि इनके पास में भारतीय नागरिकता तो है नहीं। वो तो जब नागरिकता लड़ाई लड़ेंगे? नहीं, लड़ाई तो हम नहीं लड़ सकते। खैर मैम, हमारी खैर कोई गाना गाएंगे फिर से, जैसे आप गाना गा रहे थे अभी? नहीं। आप एक बार फिर से वही गाना आपका सब सुनना चाहते हैं कि कैसे आपने गाया महाराजा परदेसी? एक बार जब प्यार में कितना ही कोई करे, आप पर आरोप लग रहा है, लेकिन आपको कुछ कहना चाहें एक बार? मेरा आवाज अच्छा नहीं, पहले लोग जैसा गा रहे हैं, प्यार में कोई आपके सुर गीत नहीं होते हैं, जैसा गा रही हैं एक बार, एक बार सीमा जी, एक बार कोशिश करती हूँ मैं। हाँ, करिए, कोशिश करिए। सचिन जी आपका साथ देंगे, इतना साथ दिया। हाँ करिए, कोशिश करिए। मैं कोई और गाना गाऊंगी, थोड़ा सा बोल दूंगी, गा लूं? हाँ, अच्छा गाना आप गा दीजिएगा। लेकिन पशुपतिनाथ मंदिर में आप लोगों ने शादी की, ये आप कह रहे हैं, लेकिन हमारे सहयोगी वहाँ पर पहुंचे, वहाँ के तो पुजारी कह रहे हैं कि हमारे पास सचिन और सीमा नाम का कोई आया ही नहीं है, ना तो रजिस्टर में लिखा हुआ है। रजिस्टर हुआ ही नहीं है, हमारी शादी रजिस्टर होती तो यार हम इतना भागदौड़ करते। तो वहाँ शादी की कैसे? आप लोगों ने गले में माला डाली हुई फोटो भी दिखाई है, बातें भी कही है, फिर शादी की कैसे जब रजिस्टर में लिखी नहीं गई है तमाम चीजें? तो वही तो मसला हो गया, रजिस्टर में नहीं है। इन्होंने मेरी मांग भरी, मंगलसूत्र पहना है जैसे होती है, पर पता नहीं क्यों वो ना हो पाई, क्योंकि हम 2 ही थे और हमें इतनी मालूमात नहीं थी, ये भी इनको भी नहीं थी, मुझे तो बिल्कुल थी। चलिए ठीक है, खत्म होने वाला। एक गाना गुनगुना दीजिए, बस एक गाना गुनगुना दे। देखिए आप तो ये भी कह रहे हैं, गुनगुना दीजिए एक गाना। हाँ, गा दीजिए। थोड़ा मुझे याद ही नहीं आ रहा, मैं कंफ्यूज हो गई, भूल गई। ऊर्जा काले गावा आपने इतना अच्छा गाया था। एक रुक जाएगा। हाँ, दूसरा गाऊंगी। हाँ, गाइए गाइए। थोड़ा मुझे दे दीजिए। हाँ, गाइए। हाँ, प्यार हमारा अमर रहेगा, याद करेगा जहाँ मैं जान जाए, लेकिन अब भारत रहेंगी। बिल्कुल। Right, I'm joined by my colleague Anshul on the broadcast when it comes to this exclusive interview that Seema Haider has given to Network 18. Anshul, she says, "इनकी मोहब्बत में मेरे को और कुछ सूझा नहीं, इसलिए I illegally entered the country." That is the big crime over here at the end of the day, and at the same time, the thing that is an investigation and the most kind of glaring issue in this entire situation is that her alleged links to people of the Pakistani deep state, to people belonging to the Pakistani forces, including the ISI. That is the big question, that when it comes to the porous borders surrounding India, especially between India and Nepal, such movements are so easy, and at the same time, anyone with any concrete plan can easily enter India, can easily disguise themselves inside the country and carry out illegal activities. That is the big concern here, and the UP ATS is continuing that investigation in that direction. Well, definitely that is the biggest issue. In fact, we at CNN News 18 have reported several times the manner in which how porous is the Nepal and India border, and how
it is a very, very big security concern for India, because if you see, Seema Haider's case has come to the fore. There can be several other people who could have crossed those borders and entered into India with definitely malicious intentions. But yes, the manner in which this entire incident has come to the fore and the investigation is ongoing. UP ATS has sadly not been able to find any concrete proof against Seema Haider's involvement in any kind of espionage at this point in time. However, there are reports that have come to the fore at this point in time that her brother is a member of a Pakistani army. In fact, is a personal in the Pakistani army, and her paternal uncle is also a Subedar rank officer in the Pakistani army. So these are a few concerns that the ATS is looking into at this point in time. But yes, till date, neither the ATS nor the Noida police has been able to find any concrete proof against Seema Haider, or has been able to get any sort of lead about the malicious intentions of Seema Haider, and that is the reason why she is enjoying a free run and giving bites to media day in and day out. Initially, the police tried to keep her away from the eye of the media because the kind of statements that she was making, that was hampering the investigation. Now, since the investigation has happened for a long time, it is still the local government has still not been able to find. In fact, the UP police has still not been able to find any concrete evidence that could actually tie Seema Haider with the ISI or the Pakistani army. Now, since the investigation is ongoing, the main focus of the investigating agencies is to make sure that Seema Haider is sent back to Pakistan, because she has entered illegally into India. And if at all Seema Haider continues to stay in India, this could give a wrong idea to other people or other women in other countries who might want to come to India, because they that this country will take them peacefully. Right, but Anshul, at the same time, she is out on bail, and what we are learning is that when it comes to this entire investigation, she was arrested by the local police on the 4th of July, and Sachin Meena was also apprehended for sheltering illegal immigrants. Both Seema and Sachin were granted bail by a local court on the 7th of July, and they are currently living together with Seema's 4 children in that home in Greater Noida. The big question is that Seema Haider still has access to mobile phones, electronic devices. You can still access the internet and, carry out all those different activities, linking up with different people in this alleged nexus that many reports suggest that is active when it comes to Seema Haider's entry into India. Are the authorities keeping a watch on her electronic footprint? Because that is something which will kind of, add more weight to all the charges that she's facing, that she is a Pakistani spy. And even at the end of the day, it's very dangerous if someone who is suspected to be a Pakistani spy still has access to all this technology and is not under surveillance. So is that something that the authorities are doing, that they are keeping a surveillance on all activities, including the electronic activities? Well, this is something that the agencies will not tell officially to anyone if they are actually looking into the electronic devices or actually keeping a surveillance on Seema Haider. But yes, this is something that is done generally by the Intelligence Bureau and other investigating agencies. But as you mentioned, that she was initially arrested on the 4th of July and then eventually was given bail on the 7th of July. And this is being seen as the biggest blunder in this entire matter, because the Right. I think